हाँ जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी। हेलो गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? We are doing rural banking module B today. I'm Advocate Dev Shridua. Let's start with our module B. So, in the last class, we talked about module A. We completed module A, and today we'll try and complete module B. In tomorrow's class, we'll be doing module C and module D. And on 20th, we have a marathon session in which we'll be doing all the possible MCQs. Plus, we'll be dealing with all the policies that are there in this rural banking. Okay, if you have any doubt in rural banking, please let me know in the chat section. If you have any doubt in module A of rural banking, please let me know in the chat section. So today what we are going to do is we are going to just overview the notes. What you need to do is you need to go on our app, download those notes and read them yourselves. If you have any doubt, you can reach out to me in the next class. जो भी important pointers है, I'll be talking about those only, and then we'll be dealing with MCQs. Okay? चलिए, let's start. So first we have is module B, unit 5, that is agriculture economy. What is agriculture economy? We all know in the first unit, first module we talked about कि हमारी इंडिया जो है primarily agriculture पे depend करती है, especially the rural sector of our society. Right? So the agriculture is the backbone of Indian economy, contributing to GDP and employment, source of food security and raw material, major driver of rural development. Why? Because most people in the rural area are dependent upon agriculture and agriculture related activities. Then we have a role of agriculture in India. It employs 45% of the workforce, support allied sectors, influence inflation and growth, vital for poverty elevation. Right. Then we have some schemes. We have different types of crops as we have studied in school time, that we have three types of crops. First is Kharif, Rabi and Zaid. Kharif में आता है rice, maize, cotton. Rabi is wheat, mustard, gram, and Z is vegetable and fodder. ठीक है, these are influenced by, ये crops influence होती है weather के हिसाब से कि कब इनको sow किया जाएगा and कब इनको cut down किया जाएगा. ठीक है. Then we have different allied activities that you can study yourselves. Let's see what is Kisan Credit Card. It simplifies access to crop loans. It is flexible withdrawal. It provides flexible withdrawal to whom? To people who are dealing with agriculture, and it provides insurance and interest subvisions. Now, and it even covered alien activities. So what is Kisan Credit Card? Kisan Credit Card is basically a credit card that is provided to the people who are doing farming, basically the farmers. So इनको क्या बोला है कि you can use this credit card and get the loans on the card on the basis of this card कि आप ये swipe करो and you can get the money, you can get the products, and आप बैंक को उस amount को as loan you can pay it on EMIs. ठीक है. Then we have minimum support price, which is provided by the government. This is announced by the government, which provides the floor price for crop. देखो, the kisan, the farmers get exploited. The farmer gets exploited by whom? The person who buys crops from them, right? या फिर मार्केट में बेचने के लिए कि क्रॉप खराब ना हो, what they used to do is they used to sell the crop at any price, कि बस पैसा आना चाहिए, क्रॉप उनके पास से चला जाए, वरना अगर उनके पास क्रॉप रहेगा तो वो खराब हो जाएगा. तो एंड इससे इससे क्या होता था, फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. कैसे कि जो बड़े मनी लेंडर्स थे वो जान के छोटे कम प्राइस बोलते थे और कहते थे या फिर हम सामान नहीं लेंगे अगर मैं हमारे मानने का पैसे नहीं लोगे. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड इज दे अनाउंस्ड अ मिनिमम प्राइस कि इतना प्राइस तो आपको क्रॉप्स पे देना पड़ेगा. अगर इतना प्राइस, मतलब देयर वाज अ सडन प्राइस सेटअप
कि सपोज 2 रुपीज़ kg फॉर वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल है उसके लिए देना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। एंड दिस इंश्योर्ड रेम्यूनरेशन रिटर्न्स, एटलीस्ट कि फार्मर्स ने जितना लगाया है कम से कम उनके पास उतना वापस जाए, प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन CACB recommendations. Then we have role of NABARD. What is NABARD? It is a financial institutions which helps in the growth of the rural sector of our society, right? So it refinancing the to bank policy planning and supervision, developmental initiatives and promoting of self-help groups and FPOs. NABARD is helping the economy of what the rural sector, right? They help in set up the RRBs, provide the loans to the rural banks. Right, the government initiative that we have is PMFBY, that is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, in which we provide crop insurance. Then we have Pradhan Mantri Sadak Yojana. This provides immigration. Then we have PM Kisan, that is helps in income support, and then we have soil health card. Again, these are the initiatives that we are going to talk about on 20th of December. Now, let's start with the MCQs. I'd request you all to keep on answering the MCQs in the chat section. Okay? India's agriculture is highly diversified due to its wide range of climatic zones, and soil types, which literacy soil largely confined to northern states such as Punjab and Haryana. The Indian agriculture year runs from June to July to June, encompassing the Kharif, Rabi, and Zaid season, with around 90% of annual rainfall received during the southwest monsoon period. The contribution of the livestock sector of national gross value added, that is GVA, is in 2020-21 was higher than that of the fisheries sector. The average size of operational landholding has increased from 1.33 hectares in 2000-2001 to 1.008 hectares in 2015-16, mainly due to population pressure and law of inheritance. Marginal landholding, less than 1 hectare, formed about 68% of all operational holdings in 2015-2016, operating around one-fourth of the total agriculture zone. Answer for this in the chat section, please. There are few pointers that I think you should learn regarding the crops. It is from June to July. The agriculture year is from July to June, from July to June. Okay, with Kharif, Kharif का क्या period होता है? July to October. Then we have Rabi from October to March. And then we have Zaid, that is March to June. This is for basically rice, wheat and veggies. देखो राबी का आप कैसे याद रखोगे? राबी वी नो दैट अप्रैल में कौन सी होती है वो, 13 अप्रैल को वी हैव बैसाखी, राइट? तो उससे वीट कटती है, इसे हम राबी याद कर सकते हैं. Rabi is from October to March. Then we have Kharif, that is from July to October. ये monsoon season होता है. Rice needs a lot of water to grow. इसे हम rice याद कर सकते हैं. And for veggies, others basically कह सकते हैं हम इसको. That is from March to June.
So statement number 2 is correct. So let's see where statement 2 number 2 is not mentioned. तो यहाँ पे 2 नहीं mentioned है, हम इसे eliminate कर देंगे. We know that 5 is common in all. तो हमें पता है 5th is correct. We know that 5th is correct. Let's see statement number 3. Statement number 3 is जो GVA है 2021 में हायर था फिशरी सेक्टर से. Yes, it was. So statement number 3 is also correct. यहाँ पे 3 नहीं mentioned है, तो let's eliminate that. We know 2 is correct, 3 is correct, 5 is correct. 2, 3 and 5 correct है. That automatically eliminates statement number 1. Now we have statement number 4 to think about. तो average land holding increase हो गया because population increase हुआ. अगर population pressure और increase हो रखा है तो क्या land holding बढ़ सकता है? The average size of land holding decreased and the declining effect was population. पॉपुलेशन बढ़ा इस वजह से जो लैंड होल्डिंग था, जो सबके पास सपोज पहले देयर वाज जस्ट वन चाइल्ड, ठीक है, हु हैड दिस प्रॉपर्टी, दिस वन चाइल्ड हैड अगेन टू चिल्ड्रन, तो ये प्रॉपर्टी का और बंटवारा, इन दो बच्चों के और आगे दो बच्चे हुए तो और प्रॉपर्टी का बंटवारा है, तो ये पर पर्सन होल्डिंग जो है वो कम होती गई. So this amount decreased due to population pressure. That makes statement number 4 incorrect, and eliminating D, B is the correct answer. B is the correct answer. Please read the statement. Indian agriculture is diverse due to various climate and soil, but lateric soils are found in Karnataka, Kerala, MP, Orissa, Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, and Assam, not in Punjab or Haryana. Next, the major source of risk in Indian agriculture includes natural, economic, and socio-political factor, with climate variability such as rainfall being a primary natural rural risk. सी हम ये बात तो हमें पता ही है कि बारिश की वजह से ही ऑलमोस्ट सारी खेती डिपेंड होती है, एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर देयर, नेचुरल इश्यूज आर देयर, देयर आर सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व, देयर इज अ क्लाइमेट फैक्टर इन्वॉल्व, मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट. तो जहाँ पे 1 नहीं है एलिमिनेट कर देंगे अगर हम, ठीक है, लेट्स एलिमिनेट 1. जहाँ पे 1 नहीं है लेट्स एलिमिनेट दैट, ठीक है. नेक्स्ट, बिटवीन 1918-81 and 2017-18 लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इन इंडिया इंक्रीज्ड while the net sown areas showed a corresponding decline. Non-agriculture area में land increase हुई. People started to move towards using the land not for the agriculture purpose, rather than using it for different purposes. That we know, ठीक है, that we know that happened. पहले बहुत ज़्यादा खेती की तरफ हम लोग थे, but अब that खेती part, the agriculture part has declined. Where now, while the net sown area showed a corresponding declines. Yes, it has. Non-agriculture बढ़ा है, and sown area जो area that we use for growing the crops has declined. Again, statement number 2 is correct. तो यहाँ पे 2 mention नहीं है, B को eliminate कर देते हैं. 1 and 2 दोनों correct है. दोनों में 3 and 4 mention है, तो 3 and 4 पे will not be applying our minds, just reading it. Out of India's total geographical area, 329 million hectares, about 141 hectare are cropped, of which nearly half areas is assured in irrigation. Multiple cropping not only enhances food production but also helps in reducing land degradation by effective लैंड यूटिलाइजेशन. देखो, हम ना ये कोशिश करते हैं कि जो लैंड है ना ये खाली ना रहे, तो सीजन वाइज यहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, सीजन वाइज यहाँ पे क्रॉप्स को लगाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब विंटर सीजन है एंड ज़्यादा पानी की नीड नहीं है तो हम वीट लगाते हैं. जब वीट निकल गई, वी नीड सम टाइम, कि वीट और राइस में थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, तो थोड़े समय के लिए ना हम इसमें वेजिटेबल्स लगाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में थोड़ा सा नरिशमेंट जाता है सॉइल के अंदर. अगेन मानसून सीजन आएगा, राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, फिर राइस लगा देते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सामान को डालने से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को यूज करने से वी नो दैट दिस सॉइल विल गेट एनहांस्ड, कि सब अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप से अलग अलग टाइप ऑफ हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. इंडिया लैक
ranked second global in milk production and first in aquaculture fish production, reflecting the growing shift towards allied agriculture activities. India is first in milk production and second in aquaculture. First in milk, second in aqua. First in milk, second in aqua, making statement number 5 as incorrect. A is the correct answer. A is the correct answer. Next. Which of the following statement correctly describes the role of agriculture in economic development? Agriculture contributes to GDP through its product contribution, which includes goods and services produced in the economy during a year. The factor contributing contribution of agriculture refers to its ability to transfer both labor and capital to non-agriculture sector, aiding industrial growth. Aiding industrial growth. So if you'll see statement number 1 and 2, statement number 1 and 2 पे focus करेंगे अभी हम सिर्फ. Both the statements here are correct. Statement number 1 and 2 both are correct. So let's eliminate जहाँ पे 1 या 2 mention ही नहीं है या 1 2 साथ में नहीं है, इससे हमारा A and B हो गया, A and C हो गया eliminate. We have 1 2 and 4 is common. Third कहीं पे mention नहीं, तो third अपने आप eliminate हो गया. Market contribution of agriculture is limited to providing raw materials for industries. See, why are we checking the answers while answering the questions? Because देखो, we have a lot of data in agriculture, ठीक है, in this rural banking. ये सारा data आपके लिए याद करना impossible है. Now what we'll do is we'll try to eliminate those pointers जो हमारे लिए important नहीं है. It will make your exam easier, and it will make your exam to it will make you to answer the questions fast, right? And fourth common है, तो let's read fourth also. Agriculture export plays a key role in foreign exchange earnings, supported by India's diverse agro climate condition and low labor cost. We all know that नंबर 4 क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर, हमारा जो क्रॉप्स है, ये हम एक्सपोर्ट से हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जो खुद के क्रॉप्स को नहीं सो करती हैं. एंड प्लस हमारे यहाँ पे कंडीशंस, जो एग्रीकल्चर की कंडीशंस है, क्लाइमेट कंडीशंस है, वो वेरी करते हैं, एंड वी डू हैव अ लो लेबर कॉस्ट. Next, decline in agriculture share in national income indicates a reduced overall importance of agriculture in the process of economic development. देखो, decline share in national income does not imply reduced importance. एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि हम इससे ज़्यादा कहीं और कमा सकते हैं, ठीक है. एग्रीकल्चर अभी भी इंडिया में काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है. काइंड ऑफ क्या, काफ़ी रूरल एरिया में अभी भी दिस एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है. और जस्ट बिकॉज एक हमारी इंडिया नेशनल इनकम कम हो रही है डजेंट मेक कि एग्रीकल्चर की वजह से हो रही है. दिस इज अ जनरल हेस्टी दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है. तो फिफ्थ पॉइंट भी इनकरेक्ट हो गया, मेकिंग सी बी एज द करेक्ट आंसर. B is the correct answer. Next, consider the following statement related to agriculture industry linkage. As an economy develops, the share of agriculture in Indian national income naturally declines. But when agriculture is viewed as a part of a broader agri-business framework, including input production and process sector, the decline in its share occurs at much slower pace. Statement number 1 is correct. Why? देखो, there the broader agriculture business concept captures input processing sectors leading to slower, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ खेती को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड्स, दैट द प्रोसेसिंग सेक्टर, जो प्रोडक्शन सेक्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सबको भी हम देखेंगे. दैट इज शोइंग कि लेसर रेट ऑफ स्लोअर पेस पे हमारे एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है. एग्रीकल्चर डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा कि हमारी नेशनल इनकम के लिए अफेक्ट करे, मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. बैकवर्ड लिंकेज मेजर्स हाउ मच ऑफ एन इंडस्ट्रीज आउटपुट इज सोल्ड as intermediate goods to other industries, while forward linkage measures how much intermediate
input an industry purchases from other. See, the definition is reverse. Backward linkage relates to input purchase. Backward related to input purchase from other industries, whereas forward linkage refers to sale of intermediate outputs to other industries. The backward मतलब इन आ रहा है incoming, and backward means incoming from other industries, and outward, sorry, forward, outgoing to other industries. Statement number 2 is incorrect. So 2 A and C में mention है. Let's eliminate A and C. Let's eliminate A and C. Let's see 1 3 4 5. अच्छा दोनों same है. B and D both are same. B and D both are same. Let's remove. Let's edit this question. ठीक है. अब ठीक है, अब देखते हैं. Now, we know 1, 3 and 4 common hai. We'll not be putting our brains into it. We'll see statement number 5 now. Input output modeling is used to uh, quantify inter-industry linkage and assume that growth in production, employment and income arises primarily from autonomous change in demand. कितनी डिमांड है ये सभी तो अफेक्ट करेगा हमारे को कि हमारी इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, right? What is the sort of demand that the country is having regarding the products, making statement number 5 as correct. D is the correct answer. Please read the explanation. Which of the following statement correctly relate to the key issue in economic development? Industrialization is always the effect of economic development and not its cause. Agriculture continues to play an important role in development as it is less capital intensive and employs a large share of population. Agriculture is important. एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट प्ले क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की बहुत नीड नहीं है एंड लार्ज पॉपुलेशन जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 2 एज करेक्ट. जैसे ही 2 हमारे को पता चल गया करेक्ट है, विल एलिमिनेट ए. नाउ विल सी 2 सब में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है. What about first? Industrialization is always effect of economic development and not its growth. No. Many believe industrialization causes development, not just follows it, meaning it can cause not merely an effect. Industrialization जो है cause हो सकता है, एक effect नहीं हो सकता. There is a difference between cause and effect. Cause effect मतलब असर, cause मतलब reason. ठीक है. सो मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज इनकरेक्ट. तो जहाँ पे 1 मेंशन है, अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो बी इज द करेक्ट आंसर, बट विल अगेन सी ऑल द स्टेटमेंट्स. अ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक environment with predictable taxes and balanced government budget supports efficient functioning of market. Yes, it does. Statement number 4. Import substitution policies generally promote innovation and productivity by encouraging domestic self-sufficiency. Import मतलब हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, तो इससे सेल्फ सफिशिएंसी तो नहीं दिख रही है. Self-sufficiency in substitution. Import substitution often limits competition and innovation, which leads to inefficiency, not self-sufficiency. Not self-sufficiency. तो statement number 4 भी incorrect हो गया. Economies like South Korea and Singapore achieved success mainly through export promotion strategies involving outward orientation and competitive exchange. हम बाहर भेजेंगे
तो हमारे में इनोवेशन होगा एंड कंपटीशन होगा, एंड इससे हमारी इकॉनमी चेंज होगी. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 एज करेक्ट. ईस्ट एशियन इकॉनमी सक्सीड थ्रू आउटवर्ड ओरिएंटेड export promotion strategies with competitive exchange rates. Consider the following statement about resources in agriculture. Land in economics include not only soil but also water, air, sunshine, and forest, and its quality depends on nutrient content, fertility, and water holding capacity. Is this correct? Yes, it is. लैंड की ना डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है. इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल नहीं आता, सॉइल से रिलेटेड हर चीज़ की, कितना न्यूट्रेंट है सॉइल में, कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 कहाँ पे मेंशन नहीं है? सी में मेंशन नहीं है. लेट्स एलिमिनेट सी. Labor supply in agriculture can be rapidly increased or reduced depending on demand, and division of labor does not significantly impact productivity. Again, in this statement is correct. Labor supply cannot be rapidly increased or reduced. ना हम बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ना कम कर सकते हैं. Any division of labor improves efficiency. जैसे ही हम डिवीजन करेंगे कि यू ब्रिंग, सपोज मैंने एक लेबर लगा रखी है एक लैंड पे, सो सब जने अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर देने का काम करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, कुछ सब के सब सोइंग का काम करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. हमें लेबर को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 2 एज इनकरेक्ट. कैपिटल इन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन लाइफ स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, and can be categorized into fixed working and social overhead. Yes, this statement is correct, जिसे आप करेंगे learn. You will learn this. You will learn this as well as this. Next. Entrepreneurship in agriculture involves coordinating land, labor, and capital through planning, implementation, and control to achieve productivity goal. Again, entrepreneurship मतलब आप land के you are the owner, right? You have the business of it. So आपको land भी देखना है, उसके अंदर क्या labor है, क्या capital है, क्या implementation है. You have to see everything. ठीक है. Resource efficiency is achieved when scarce resources are allocated to maximize net economic benefit. While productivity measure output per unit output per unit of input. ठीक है. This statement is again correct. Statement number 1, 3, 4 and 5 are correct. That is B is the correct answer. चलिए, let's see. We have unit 6 now, that is rural development policies. So meaning of rural development policies कहता है these policies. What is rural development? Improvement in quality of life in rural population, economic, social, institutional development, focus on income, employment and infrastructure, sustainable and inclusive growth. Again, आप ये सब नोट्स खुद पढ़ सकते हैं. You all you need to do is download the PDF from the link mentioned in the description box. हाँ, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है इस पॉलिसीज में? सी पंचायती राज क्या है? हमारे ग्रास रूट लेवल पे होते हैं. They help in implementation of the schemes that are made by the government. They conduct the social audit because the rural people are more comfortable in talking about their problems with the people among themselves. जो पंचायत के हेड होते हैं उनके साथ ये usually they think that they are the head of the village and they can talk about anything with that head. ठीक है, इससे community participation होता है. Then we have Mahatma Gandhi NREGA. We know that about this policy. We talked about this in class, for last class, that is module A, in which we talked कि 100 days का कम से कम minimum employment देगी गवर्नमेंट. ठीक है, कितने दिन के अंदर? जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसके 15 डेज के अंदर. नेक्स्ट वी हैव दीन दयाल अंत्योदय योजना. This we helps the self-employment program, self-help group promotion, formation, skill development, women empowerment. Then we have प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल हाउसिंग में पक्का घर बना के दे रहे हैं. नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, एक्सेस टू क्रेडिट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये हमारा गोल है. देन वी हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन इंसेंटिव्स.
These are the incentives, that is DBT, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Dhar Linkage, BC model, digital payments. Then we have this RIDF. This is managed by the NABARD, funded by banks, PSL shortfall, supports rural infrastructure, irrigation, road, bridges. Challenges क्या क्या है? पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, लो स्किल्स है, एंड क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट है. देन यू कैन रीड अगेन. जो भी पॉइंटर्स आई हैव नॉट टॉट, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बट पढ़ने पड़ेंगे. Again, all the schemes, all the yojanas will be taught by me on 20th of December regarding the National Rural Livelihood Mission and its evolution. Which of the following statement are correct? NRLM was launched in 2011, restructuring the earlier Swan Jayanti Gram Swarozgar Yojana to focus on sustainable livelihood and poverty reduction. When we talk about NRLM, when we are talking about NRLM, statement number 1 is correct. This was launched on 3rd of June 2011. 3rd June 2011. ठीक है. This had been reconstructing the SGSY for focused poverty reduction and sustainable livelihood. Next is NRLM follows on top-down allocation-based strategy where states have minimum flexibility in formation their poverty reduction plans. नहीं. This is NRLM is demand driven strategy. NRLM is demand driven strategy allowing states to develop their own livelihood based plans. स्टेट्स को क्या डेवलप कराने के लिए हेल्प कर रहा है? अपने खुद के लाइवलीहुड प्लान्स को डेवलप करने के लिए. Statement number 2 is incorrect. The NRLM target group is identified through a participatory process and the committee level and is delinked from the official BPL list. Statement number 3 is correct. NTG is identified through the participatory identification of poors process, delinks the below poverty line list. Next, core values of NRLM includes inclusion of poorest, transparency, community self-reliance, and ownership by poor households in planning, implementation, and monitoring. Statement number 4 is also correct कि NRLM का this is the emphasis कि include करना, transparency रखना, accountability रखना, self reliance रखना और ownership करना किसकी? poor की. ठीक है, by the poor. Next is NRLM works only on the supply side of the financial inclusions, providing credit support to self-help groups without addressing financial literacy and demand साइड इंटरवेंशन. नहीं, देखो NRLM क्या है, ये दोनों सप्लाई और डिमांड के ऊपर फोकस करता है. दिस हेल्प्स इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ICT enabled services and access to credit, मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 एज इनकरेक्ट. हमारा फिफ्थ इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनरेगा आर करेक्ट? Manrega guarantees at least 100 days of unskilled manual work in financial year to every rural households that voluntarily participates. Yes, it is. यही तो हमारा है. This act guarantees 100 days of employment per household, making statement number 1 correct. The act was initially implemented in 200 districts in February 2006 and extended to all remaining districts by April 2005. This is again correct. दो phases में आया था. First phase was in 2006, second phase was in 2008. First phase में सिर्फ 200 districts ली थी और बाकी districts को हमने 2008 तक cover करना था. Next statement.
One of the key objective of MNREGA is to strengthen Panchayati Raj institution and promote participatory planning. Yes, this helped in strengthening Panchayati Raj institutions and participation planning in the core. This was the core objective. Next, MNREGA is demand driven, right based programs providing legal guarantee of wage employment allowed and compensation for delays. Again correct, हम इसके बारे में already first module में पढ़ के आए हैं. Under मनरेगा the central government can make rules and delegate all powers making including making rules to state government and subordinate. सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कभी भी पार डेलीगेट नहीं करते. डेलीगेट मतलब अपना काम किसी और को देना कि यू डू दिस वर्क ऑन माई बिहाफ. दैट दिस इज नॉट व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट डज. सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे काम करती है. इट डज नॉट डेलीगेट. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 एज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 5 करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है. मेकिंग ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, रोहित अ यंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम असम. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे. वांट टू सेट अप अ माइक्रो एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन. ही इज सीकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, institutional guidance for training in entrepreneurship and management skills, mentoring and follow-up supports for startups, access to research, consultancy and business development services, networking with other entrepreneurs, and awareness of government schemes like Pradhan Mantri Yuva Yojana. He is evaluating two national institutes, NIESBUD and IIE. Rohit wants to understand which institute can provide support in different areas of his startup journey. Statements. NIESBUD can provide monitoring, handholding, and follow up support through an e mechanism along with access to knowledge, repositories, and government policy material. Is this correct? Yes, it is. NIESBUD का यही काम है. They help in monitoring, they help in handholding और e mechanisms के through and knowledge बांटते हुए आगे चलते हैं. Next statement is IIE primary focuses on entrepreneurship training for MSME, conduct research, provides consultancy, and promotes IT-enabled initiatives for entrepreneurship development. Is this statement correct? Yes, it is. The IIE focuses on entrepreneurship training for MSME, and the whole statement is correct. NIESBUD organizes intervention specifically under schemes like Pradhan Mantri Yuva Yojana, including assessment and certification of beneficiary. Give me a second, please. This statement is again correct. इनका इंटरवेंशन है प्रधानमंत्री युवा योजना को आगे बढ़ाना. ठीक है. उसकी सर्टिफिकेशन दिलाना, उसमें असेसमेंट में हेल्प करना. Next statement. IIE has no role in providing mentoring or facilitating follow-up support for startups and self-employed ventures. अभी हमने पढ़ा MSME for entrepreneurs को हेल्प करते हैं हर तरीके से ग्रो करने में, ना बोल रहा है कि नहीं हेल्प करते हैं. तो दिस मेक्स statement number 4 as incorrect. Both NIESBUD and IIE coordinates with other organizations to increase outsearch, promote entrepreneurship, and enhance employability of the participant. But not only NIESBUD is involved in integrating entrepreneurship into formal education stream. ठीक है. अभी है क्या, हम बार बार बोल रहे हैं NIESBUD. ठीक है. इसकी फॉलोइंग फुल फॉर्म है नेशनल yes.
National Institute for Entrepreneurship ठीक है and then we have IIE ठीक है पहले NIESBUD का देख लेते हैं क्या होता है व्हाट इज NIBSUD देखो इसकी ये हुआ था 1983 में सेटअप हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दिस वाज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में नोएडा उत्तर प्रदेश ठीक है it promotes the entrepreneurship and skill development by training research and capacity building for small business and rural entrepreneur ठीक है next is IIE is Indian Institute of Entrepreneurship ठीक है ये हुआ था 1993 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट अगेन दिस वाज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया and especially for the skilling of MSMEs, rural non-farm sectors and startups and self-employed ventures. ठीक है सो अब हमारे को आंसर पता चल चुका है द आंसर इज ए नेक्स्ट Ravi, a 22-year-old graduate from small town in UP, wants to enhance his employability skills and earn a livelihood. He learns about the Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana and decides to enroll in skill training program. Ravi's course is being conducted by Pradhan Mantri Kaushal Kendra in his district. Based on the above case, consider the following statements and identify the correct ones. PMKVY was launched on 15th of July 2015 on occasion of World Youth Skill Days. Next is this statement correct? Yes, this is correct. Date इसको आप learn कर लेंगे. Under PMKVY, 75% of the funds are allocated to the states, while 25% are managed by the National Skill Development Corporation. This statement is incorrect. ठीक है क्या इसका वो है 75% जो है फंड्स जो एलोकेट करते हैं एलोकेटेड टू द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड कंपोनेंट्स वाया NSDC एंड 25% जाता है स्टेट के पास स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड ठीक है जो सेंट्रली मैनेज है उनके पास 75% एंड स्टेट के पास 25% उल्टा लिखा है दिस इज अपोजिट ठीक है स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है नेक्स्ट इज PMKK aims to set up a model skill center in every district, ensuring coverage to all parliamentary constituency. This statement is correct. Next, the primary object of PMKYV is outcome-based skill training to improve employability and provide livelihood opportunity. Yes, this is again correct. Next, PMKK emphasis transforming short-term mandate-driven programming training programs into sustainable institutional models and aspirational values. Again, statement number 5 is also correct. 2 incorrect hai. That makes C is the correct answer. Next, consider the following statement about the Udan and Yuva scheme. Identify the correct ones. The Udan scheme, funded by Ministry of Home Affairs, aimed to train 400 youths in JNK over 5 years, yet exceeds its target with more than 44,000 participants, of whom about 24,000 received job offers. Yuva scheme
launched in November 2016, provided online training facilities across 3,000 plus educational institutions, including 50 skill development labs, while also offering mentoring networks and entrepreneurship hub. Udan implementation involves 115 corporate participating in 2004 mega selection drives, ensuring direct exposure to corporate India for JK youth. UA scheme's primary eligibility criteria is youth below 30, with provisions to award youth entrepreneurs contributing to real asset growth of the economy. Let's talk about all the statements here. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. 40,000 उड़ान का टारगेट 40,000 यूथ था, बट इवेंचुअली 44,000 ट्रेनीज आ गए थे एंड 24,000 डिड गेट अ जॉब. Next, let's talk about statement number 2. UA includes online training program across 3,000 plus institutes, 50 development labs, mentoring networks, and entrepreneurship hubs, making statement number 2 as correct. Let's see statement number 4 now. UA is for 30 below the people, below 30 people, below the age of 30, उसके लिए उनके लिए युवा है. ठीक है, रियल एसेट ग्रोथ की कंट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इसमें बात करी गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर 3. ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, फैक्ट्स जो इसके करेक्ट है. The question emphasis core objective, funding eligibility, not operational details. ठीक है, ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है. सो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. देखो, इन द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, इनकरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द स्कीम्स के बारे में बताना है. ऑपरेशन क्या करता है? ठीक है, व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? Next question. Consider the following statement regarding Shyama Prasad Mukherjee Rurban missions. The mission was launched in September 2015 with the aim of developing 300 Rurban cluster over 5 years. The Rurban cluster is defined in geographical contiguous set of villages with a population of 25,000 to 50,000 in hilly, tribal and desert area. The mission emphasizes both skill development linked to economic activities and improvement of physical infrastructure such as road, sanitization and piped water supply. Public transport, digital literacy, and citizen service center are considered desirable components of each urban cluster. Next, the mission focuses solely on economic development with no consideration for preserving rural community life of exclusiveness. देखो, पढ़ते ही पता चल रहा है स्टेटमेंट नंबर 5 ना इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 5 जो है इनकरेक्ट है. हाउ कैन अ मिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मिशन जो है वो लाइफ और इंक्लूसिवनेस के ऊपर कंसिडरेशन ही नहीं दे सकता. बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑल द अदर स्टेटमेंट्स नहीं. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज सितंबर 2015 में हुआ था. 3 इज करेक्ट बिकॉज दिस इज अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक ट्रांसपेरेंसी. 4th इज करेक्ट. थर्ड क्या है? द सेकंड इज द रूरबन क्लस्टर इज डिफाइंड एज अ ज्योग्राफिकल कंडीशंस. पॉपुलेशन इन हिली, डेजर्ट एंड ट्राइबल एरिया इज 5,000 to 15,000, नॉट 25,000 to 50,000. हिली एरियाज में, डेजर्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में बहुत कम जने रहते हैं. ठीक है, सो जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल डिविजन्स ना, इट इज हिली, डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज में 5K to 15K people, 15K, and for coastal and plain it is 25K to 50K population people एक ही बात है. ठीक है, तो मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 2 एज इनकरेक्ट. तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट. A is the correct answer. Issues concerning rural areas. Rural area snapshot. Again, you can read underemployment और unemployment में difference करता है. काम ना मिलना unemployment.
एक जगह पे ज़्यादा जने काम करना, ठीक है। सपोज ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, हेयर वी रिक्वायर 2 people टू वर्क, बट देयर आर 4 people दैट आर वर्किंग ऑन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रोडक्शन है इसकी ₹100 की ही होनी है, चाहे 2 जने काम करें चाहे 4 जने काम करें, 100 रुपये की ही प्रोडक्शन होनी है। जब हम 2 जने काम कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 50 रुपीज ईच, जब 4 जने काम कर रहे हैं वी आर गेटिंग 25 रुपीज ईच, बिकॉज वी आर इवेंचुअली गेटिंग 4 people 100 रुपीज। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें बस काम करना है, बिकॉज हमें काम करना है, दैट इज वाई वी आर डूइंग इट। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद, इसमें क्या क्या पॉलिसीज है? मनरेगा हम पढ़ चुके हैं, बीमा योजना पढ़ चुके हैं, जनधन योजना पढ़ चुके हैं, एनआरएलएम हम ओवरव्यू ले चुके हैं, सड़क योजना हम पढ़ चुके हैं। लेट्स सी द एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द concept and components of rural development? The rural development primary focus on improving the living standards of rural people through agriculture growth alone, with minimum emphasis on social and human development. According to Robert Chambers, rural development aims to empower poor rural women and men to demand and control more of the benefits of development. Components of rural development includes agriculture and non-agriculture farming sector growth, employment generation, income enhancement, and provisions of essential amenities like health, education, and infrastructure. चलिए, just give it a reading. Put your brains logically क्या correct होना चाहिए and give me an answer for this. ठीक है? Give me an answer for this question, please. What will be the correct answer? C. Statement number 1 here is incorrect. Why? Because rural development is holistic concept that includes not only agriculture process but also social, infrastructural and human resource development. सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करते रूरल डेवलपमेंट में हम, we focuses on all so that there is a development in all the sectors of the society. Then again, when we talk about the Robert Chamber, it emphasizes on empowering the poor rural population, particularly the small farmers, the tenants, the landless worker, ताकि उनको एक्सेस मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए किसका? लैंड का, ठीक है, अपना ऑटोनॉमी मिल पाए बेसिकली. Again, statement number 3 is also correct because why? This is correct since the components of the rural development जो है वो नॉन फार्मिंग सेक्टर और फार्मिंग सेक्टर दोनों के लिए है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, इनकम किसी तरीके से बढ़ जाए उसके लिए है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन बढ़ाना, रोड्स बढ़ाना, हेल्थ के ऊपर वर्क करना, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. Statement number 2 and 3 are correct, 1 is not correct, that is B is the correct answer. Which of the following statement correctly describes the various approaches to rural development in India since independence? The community development program aimed at the overall development and material and human resources but failed to significantly increase agricultural production due to thinly spread resources. The growth oriented approach of 1960 emphasized employment generation and social welfare through community participation. The target group approach of 1970 followed as improving the income level of small and marginal farmers and agriculture laborers through agencies like SFDA and MFAL. The area development approach was designed to reduce regional disparity through area specific programs like DPAP, DDP, HADP, and TADP. Next, the integrated rural development approach sought to balance growth, poverty reduction, and employment generation by integrating economic values across primary sector and secondary sector and tertiary sector.
सी स्टेटमेंट नंबर 5 पे फोकस करेंगे हम पहले. स्टेटमेंट नंबर 5 इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 5 करेक्ट है. क्यों? क्योंकि द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच द IRDP 1979, इसे हम IRDP कहते हैं. This this program is combined for a positive aspect. This program has a positive aspect जिसे हम ग्रोथ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एंड पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में बात करते हैं. Let's talk about statement number 1 now. Community approach aimed at comprehensive rural development but failed to achieve sustainable agriculture output due to limited resources. ठीक है. एग्रीकल्चर आउटपुट को हम सस्टेन नहीं कर पाए. ठीक है. सस्टेनेबल जो दिस पॉलिसी जो थी ना कम्युनिटी अप्रोच वाली, ये हमने रूरल डेवलपमेंट में तो लगा ली बट हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ा नहीं पाए. दैट मेक्स स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 3. टारगेट ग्रुप अप्रोच जो 1970 का था, दिस इंट्रोड्यूस्ड SFDA and MFAL to uplift small and marginal farmers and rural laborers. Now, let's talk about statement number 2. The growth-oriented approach focused primarily on increasing production, not employment, not welfare, but production. और ग्रोथ ओरिएंटेड, हम ग्रोथ किसकी करा रहे हैं? प्रोडक्शन बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और सब कुछ कम होता रहेगा. सब कुछ मतलब एवरीथिंग देयर विल बी अ ग्रोथ इन द इकोनॉमी. We do not aim at the welfare of the this society. We aim at increasing the production by the growth oriented approach. ठीक है. By the growth oriented approach. तो स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया इनकरेक्ट. What is the correct answer? 2 incorrect हो गया. That is C is the correct answer. Okay. Next. Consider the following statements related to sustainable rural development in India. Sustainable rural development focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation and emphasis conversion of natural, physical and human resources. हम लोग बचपन से वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इज इन दिस द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट कि हम अपना काम इस तरीके से करें ताकि फ्यूचर की जनरेशन की दिक्कत ही ना हो. राइट. दिस इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. तो जहाँ पे 1 मेंशन नहीं है, अगर हम C एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे. Let's see statement number 2. Improper land and water management has caused water and wind erosion in nearly 1/3 of India's total land area, affecting rural progress. This is correct. ठीक है. This is correct. हमारा improper use. We have been using the resources so widely, so irresponsibly that we have to focus on sustainable development. Otherwise, there will be nothing left for our future generation. As per the National Forest Policy of 1952, the target of land under forest covers is 23% and India has already surpassed it. Is India surpassed it? No. It was the target 33% का था, but the current coverage is 23%. द मीनिंग इज हम लोग 33% पहुंच ही नहीं पाए. 33% हम लोग पहुंच ही नहीं पाए. राइट नाउ वी आर एट 23. द टारगेट वाज 33. स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट. देखो इससे हमें पता चल गया ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी ठीक है. ठीक है. एक बार पढ़े. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में मोर क्रॉप पर डे ड्रॉप के बारे में है ये. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. द सॉइल मैनेजमेंट initiative promotes integrated nutrient management and strengthening the soil and fertilizer testing facilities. देखो तो हमें पढ़ते ही पता चल गया कि soil management से related ही है ये. And प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना aims at the goal more crop per drop. ये ना आप learn करेंगे please. By promoting water use efficiency, precision irrigation and decentralized state level planning through district irrigation. Dip and sip. ठीक है. इसे learn कर लिया जाएगा. You have to learn this. Next. Which of the following statements correctly highlights the major necessities of rural development in India?
The agriculture sector still suffers from low productivity, uneven regional growth, and dependency on rainfall, leading to fluctuating farmers' income. Is it true? Yes, it is. एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, हाईली। जहाँ पे वन नहीं मेंशन है हम उसे एलिमिनेट करेंगे। सी एलिमिनेट हो गया, हमारा ऑप्शन ही सी एलिमिनेट हो चुके हैं। रूरल नॉन फार्म sectors such as handloom, khadi, and handicraft have remained competitive due to strong infrastructure and technological stock. नहीं, हमें पता है, देखो, जो हमारा नेशनल, जो हमारा नॉन फार्मिंग सेक्टर्स हैंडलूम्स है, जैसे खादी है, हैंडीक्राफ्ट है, ये दिस इज अ हैंडलूम, ठीक है, दिस इज समथिंग पीपल वांट, बट दिस इज सो एक्सपेंसिव दैट पीपल कैन नॉट बाय दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है। ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, खादी एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर नॉट competitive. They lag behind due to lack of infrastructure and technology. क्योंकि हाथ से इतना काम है कि उसको करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तभी तो इसलिए टाइम लग रहा है, तभी तो ये महंगा है। पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है उस चीज़ में। वी आर एम्प्लॉइंग अ लॉट ऑफ स्किल्स इन इट। नेक्स्ट, statement number 3. Mass poverty in rural area is largely a result of structural, social, and economic inequality necessitating targeted government interventions. This is correct. Next, disguised unemployment and seasonal nature of agriculture works contribute to underemployment in rural area. Exactly correct. Next, most rural entrepreneurs have strong bargaining powers in marketing and process due to organized competitive structure. क्या है? रूरल एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्ट्रांग है? नहीं। रूरल एंटरप्रेन्योर्स आर लार्जली स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड, रिजल्टिंग इन वीक बार्गेनिंग पावर्स। दे नीड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है बार बार ताकि वो ग्रो कर पाए। स्टेटमेंट नंबर 5 इनकरेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement correctly describes the key measures necessary for rural development and economic growth? Increase in capital stock, either through domestic savings or foreign aid, enhances labor productivity and facilitates rural capital formation. Technology upgrading in agriculture has been widespread across all rural areas since green revolution and traditional practices nearly eliminated. Statement number 1 is correct. देखो, despite green revolution, traditional technologies still prevail. ठीक है, इन मेनी रूरल एरियाज ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज आर स्टिल देयर। स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। जैसे ही 2 इनकरेक्ट हुआ हमें पता चल गया बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ renewable and non-renewable resources plays a vital role in determining the country's economic development. Yes, it does. Development of human capital through skill enhancement, entrepreneurship, promotion, and better healthcare is essential for improving productivity in rural sector. This is what we need. Human capital की प्रॉपर नीड है, हमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन करना ही पड़ेगा। दिस क्या नाम है, कौन सी स्कीम है, क्या नाम है, where we are promoting self employment, MSME बना रहे हैं हम। there is a scheme by the government कि आप अपना काम खुद करो, आत्मनिर्भर योजना, ठीक है। Now, the state's role includes providing resource institutions and regulatory framework to ensure efficiency, functioning of rural market, and completion of development project. Statement number 5 is also correct. B is the correct answer. State must ensure adequate resources, institutions, and regulations for sustainable rural growth. Next statement. Question. Which of the following statements are correct regarding the concept, issue, and management aspect of rural development? The rural development focuses solely on increasing agricultural productivity without emphasizing human rural development or social infrastructure. The four essential components of human development paradigm as per the Human Development Report are productivity, equity, sustainability, and empowerment. Sustainable development as per the Brundtland Commission implies meeting current need without compromising the ability of future generation.
अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला यही तो पॉइंट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही तो पॉइंट था। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। 3 जहाँ पे मेंशन नहीं है हम उसे एलिमिनेट करेंगे, बी को एलिमिनेट हमने कर दिया। देखो रैंडमली पढ़ते पता चल गया हमारे को रैंडमली कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑल वी नीड टू डू इज पुट आवर ब्रेन्स, रीड करते करते हमें पढ़ना है हर स्टेटमेंट को। मुझे बाकी स्टेटमेंट भी नहीं पता था, बट हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, राइट। अगर मुझे बाकी स्टेटमेंट भी नहीं पता था, आई एम टीचिंग आई नो, बट सपोज आपके साथ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट देयर विल बी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट जहाँ पे आपको लगेगा नहीं ये करेक्ट है, और उससे आपको आंसर करने में ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Effective facilitation of rural development involves human resource development, infrastructure development, and policy support. This is correct. Facilitation of rural management includes three components: human resources development, which talks about the empowerment, the leadership skills, the promotion skills. Okay, then we talk about infrastructure, that is road, power, marketing, banking, water, and then there are policy supports. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। तो 4 जहाँ पे मेंशन नहीं है उसे एलिमिनेट कर देते हैं। 3 4 3 4 3 4 एंड 3 4। 2 and 5 पे we have to put our brains। 1 तो हमें पता चल गया इससे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट statement number 5. The major challenge in organizing a rural development is to ensure centralized administration through government department to better control and reduce leakage. Government कभी भी अपना centralized control नहीं चाहती। Indian Express revealed that centralized government control leads to inefficiency and leakages. हमारा मॉडल क्या है? डिसेंट्रलाइज करना। कैसे? एनजीओस को लेके आना, पंचायती राज को लेके आना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके आना, डेवलपमेंट ग्रुप्स को लेके आना, डिफरेंट योजना से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना, ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे। देर इज नो जस्ट वन पर्सन हु इज देयर टू सपोर्ट एवरीथिंग। ठीक है, मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 एज इन करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। रूरल क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट प्रोवाइडेड इन टू रूरल सेक्टर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, एनेबल रूरल डेवलपमेंट, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स। खुद पढ़ लीजिएगा प्लीज इसे। आरआरबीज के बारे में, पैक्स, डीसीसीबीज, एससीबीज के बारे में इसमें मेंशन है। प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड है उतना इसमें मेंशन है, आपको बस इसे रीड करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो मैं दिख लेती हूँ, लेट मी चेक इफ देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू। अच्छा ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्या है हमारे पास? शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है एंड मेंबर ओन्ड इंस्टीट्यूशंस है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स में कौन कौन आता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दैट इज पीएससीज, district central cooperative banks, that is DCCBs. Then we have state cooperative banks, that is SCBs. लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, दैट इज SCARBDBs। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव प्राइमरी कोऑपरेटिव ARDBs, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्टेट वाला हो गया, फिर वी हैव प्राइमरी वाला। देन इज टर्म लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर। Primary agriculture credit societies, that is PACS, they are the grassroots institutions, short and medium term loans, crop loans and allied activities, member based functioning। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है हमारे पास? कहाँ से लोग पैसे ले सकते हैं, लेते थे, लेते हैं? मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, हाई इंटरेस्ट exploitations etc. NABARD कैसे आता है यहाँ पे? NABARD is the apex rural credit institution, refinance to banks, supervisions of cooperatives and RRBs, RIDF management, developmental initiatives। रीफाइनेंस बाय NABARD क्या होता है? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस होता है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, देन वी हैव द गवर्नमेंट सपोर्ट्स, दैट इज इंटरेस्ट subsidies schemes, credit guarantee, KCC expansion and policy support। Let's start with the MCQ now। Consider the following statement regarding the short term credit structure of India। Identify which of the following are correct।
Short-term cooperative credit structure have three-tier structure consisting of state cooperative banks at state level, district central cooperative banks at district level, and primary agriculture credit societies at village level. Is this correct? Is this statement correct? Yes, this statement is correct. Statement number 1 is correct. Statement number 1 is correct. स्टेट में थ्री होता है, थ्री लेवल्स है. फर्स्ट इज, ठीक है. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 2. State Cooperative Bank directly promotes loans and financial assistance to farmers and other individuals, borrowers and cooperative credit system. This is incorrect. State वाले क्या करते हैं? They do not provide money to the farmers. ठीक है. They provide funds to DCCBs and DCCB आगे provide करता है PSCs को and वो PSCs करता है farmers को. So state वाले कभी भी finance provide नहीं करता है किसको? Farmers को. Statement number 2 incorrect है. जैसे ही 2 incorrect हुआ हमारा A और C eliminate हो गया है. 1, 3, 4 दोनों में कॉमन है. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 5. द शेयर कैपिटल ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज solely contributed by state government with no involvement of DCBs. This is incorrect. The share capital of state is primarily contributed by DCCBs with state government also contributed post 1954. Statement number 5 is incorrect. Statement number 5 incorrect होते हैं बदल के D is the correct answer. तो हम लोग B 3 and 4 को हम रीड करेंगे. The McLagan Committee of 1914 recommended the establishment of apex cooperative banks in major provinces to coordinate the DCCBs and link cooperatives with the money market. NABARD monitors and guides STCBs to strengthen loan management practices, internal control, and adherence to RBI prudential norms. This is correct. NABARD क्या है? They play a key role in institutional development, ensuring proper governance and loan management and adherence to RBI norms. Which of the following statement about district central cooperative banks are correct? The district cooperative central banks primarily provides finances to banks federated to them and also offer external functions assisting in both credit and non-credit segments. See, यही काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है पैक्स को पैसे देना. ठीक है, साथ में असिस्टेंस भी देते हैं, सुपरविजन भी देते हैं और डिपॉजिट्स को मोबिलाइज भी करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. The share capital of DCCBs is solely contributed by the state government to augment borrowing power. This is incorrect. The share capital comes from both state government and federal societies. सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आता है. स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. जैसे ही 2 इनकरेक्ट हुआ A एंड C दोनों एलिमिनेट हो गए. A एंड C दोनों एलिमिनेट हो गए. 1 एंड 3 दोनों में कॉमन है B एंड D में. सो लेट्स नॉट पुट आवर ब्रेन टू 3, जस्ट 3 को पढ़ लेते हैं. DCCBs आर नॉट गारंटीड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस बिकॉज they already have borrowing arrangements with the state cooperative banks and scheduled status might weaken the cooperative movement. ठीक है, इनको शेड्यूल इसलिए नहीं करा गया बिकॉज दे हैव बोरिंग सिस्टम विद स्टेट गवर्नमेंट बैंक. और जैसे ही हम लोग इनको शेड्यूल बैंक्स में लिस्ट में डाल देंगे वैसे इनकी जो कॉपरेशन मूवमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट वाला जो मूवमेंट होता है वो वीकन अप हो जाएंगे. DCCBs are generally required to automatically merge if it fails to maintain the CRR of at least 9% as per RBI recommendation. This is incorrect. The expert committee recommended underperforming DCCBs बट मर्जिंग अंडर परफॉर्मिंग DCCBs मर्ज करने का, जो दो DCCBs है उनको मर्ज करने का. बट CRAR को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑटोमेटिक मर्जर तो वैसे भी नहीं होता है. ठीक है, देयर इज नो थिंग एज ऑटोमेटिक मर्जर्स. NABARD conduct statutory inspection and off-site surveillance of DCCBs using section 35 of RBI Bank. This is correct. On this, sorry, BR Act. Statement number 5 is correct. 4 incorrect हो गया है. 1 and 1 3 B is the correct answer. Next, regarding primary agriculture credit society, तो हमने फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ा था. सेकंड we talked about DCBs and now we are talking about PACs.
इन पॉइंटर्स को जो जो करेक्ट है और जो जो नहीं है आपको उन्हें रीड करना है। कहाँ से करेंगे आप रीड? क्वेश्चन पढ़ के इन आंसर्स की जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको ढंग से रीड करेंगे ताकि आपको इनके अंदर क्या है वो पढ़ा जा सकते, बिकॉज अभी आप पूरा कंटेंट नहीं चेक कर सकते। ऑल यू नीड टू डू इज गिव इट एन ओवरलुक। तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा जाएगा। यू हैव टू लर्न ऑल द 3 पॉइंटर्स इन दीज सो दैट व्हेन इट कम इन एग्जाम आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाए। Next, the packs were initially formed under the Cooperative Credit Societies Act of 1904 with the objective of providing cheap credit to farmers and reducing dependency on money lenders. Is this the role? Yes, it is. पैक को establish करा था 1904 में। इसका काम था क्रेडिट देना, लोन्स देना, मनी लेंडर्स को हटाना। ठीक है। बेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट होती है, सी हमारा कट गया है आंसर में से। द मैनेजिंग कमेटी ऑफ पैक कंसिस्ट ऑफ 5 to 9 members इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर of all of whom receive salary for their services. प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये क्या ऑनररी पोजीशन पे है, इनको सैलरी नहीं मिलती है, इनको सैलरी नहीं मिलती है। एंड देयर आर 5 to 9 मेंबर्स। ठीक है, देयर आर 5 to 9 मेंबर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। जैसे ही सेकंड इनकरेक्ट हुई बी भी एलिमिनेट हो गया है। Now we have 1 3 5 common in both. Let's see statement number 4. ठीक है, members borrowing capacity of PAC is independent of number of shares held by them in the society. नहीं, मेंबर की बोरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कितने शेयर्स उनके पास है। हाउ मच ऑफ शेयर्स डू दे हैव। बिना शेयर के ऊपर देखे हुए हम उनकी शेयर की वैल्यू देखे हुए हम उनको लोन अमाउंट नहीं दे सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 हो गई इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। PAC provides short-term credit, non-personal security, and medium-term credit against immobile assets and mortgages. PAC receives loans from DCCBs in 3-tier system, STCs in 2-tier system. ठीक है, कैसे? State to district, CCBs, CCBs to PCBs, PACS. ये है हमारा कितने विलेज लेवल पे। नेक्स्ट, regarding farmer service societies and large size Adivasi multi-purpose societies, which of the following statements are correct? FSS, that is farmer service societies, were launched in 1973 to cater to both credit and non-credit farmers of needs of farmers, particularly small farmers at single contact point, at single contact point. FSS लॉन्च हुआ था in 1973 for credit and non-credit needs. सिंगल पॉइंट पे स्पेशली स्मॉल फार्मर्स को, सिंगल पॉइंट पे स्पेशली स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, statement number 1 is correct. Under PACs, FSS operates in 10 to 20 village initially with potential business of 2.5 to 3 million in 3 to 5 years and may growth up to 10 million in 5 to 7 years. This statement is correct. 10 से 20 विलेजेस में काम करता है, इनिशियली 2.5 से 3 का होता है, देन 10 मिलियन तक जा सकता है। Lamps are set up primarily in tribal and hilly areas to restrict membership of 100%. Lamps जो है मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन करता है 75% तक, 100% की नहीं, 70%, सॉरी 70% करता है ट्राइबल्स की, 70% अप टू 70%। ठीक है, both FSS and lamps provide technical guidance, input supply and support for agro processing or allied activities. Statement number 4 is correct. Statement number 5. FSS management and membership are deliberately oriented towards weaker section of the rural population to change the local power structure. This statement is also correct. हमारा क्या इनकरेक्ट हुआ है इसमें? थर्ड इनकरेक्ट हुआ है, 1 2 4 and 5. B is the correct answer. Next, consider the statement regarding ARDBs, that is Agriculture and Rural Development Banks and Cooperative Society in India. Identify which of the following statement are correct.
Non-credit cooperative societies like handloom weavers societies and fishermen cooperatives are affected with district central cooperative banks to avail credit facilities for working capital requirement. The long-term cooperative credit structure begins with the establishment of central land mortgage banks in Madras to coordinate the primary function of primary land mortgage bank. BARD and PCAIB operates under the BR Act and primary finance through deposits from rural household. स्टेटमेंट नंबर 3 जो है इनकरेक्ट है। पहली बात क्यों? और देखो ये जो NCARDBs है और PCARDBs है ये बैंक ही नहीं है। अगर ये बैंक नहीं है तो BR एक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। और ये किसके ऊपर रिलाय करते हैं? ये रिलाय करते हैं नबार्ड पे प्लस डिबेंचर सब्सक्रिप्शन पे। शेयर्स एंड डिबेंचर सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि किसी और के ऊपर। और सिंस दे आर नॉट ऑफ द स्टेटस ऑफ बैंक, BR एक्ट नहीं लगेगा। स्टेटमेंट नंबर 3 हो गई इनकरेक्ट। 3 हर जगह मेंशन्ड है, ए से पता चल गया करेक्ट आंसर ए है। दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट 3 आर करेक्ट। The ARDBs plays a key role in promoting farm mechanization and minor irrigation in 1960 and 70 and later diversified into financial rural non-farm sector projects. High overdues, faulty loaning policies, inadequate supervision and state governments write-offs have contributed poor recovery performance and financial deterioration of ABARD. ARDBs, ठीक है। इन पॉइंटर्स को हम प्लीज लर्न करेंगे, इस स्लाइड को आप लर्न करेंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं इसमें यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। देन वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NAFSCOB was established in 1964 to facilitate operations of state and central cooperative banks and promote cooperative credit. The National Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Federation primary functions to regulate interest rates for SCARDBs. NCDCs are established by the Act of Parliament under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to plan and promote finance programs for agriculture and related activities. देखो जो NCD है ये एक पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर से ही इसको हेल्प मिलती है। स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया करेक्ट। 3 मेंशन नहीं है डी में, हमने एलिमिनेट कर दिया है डी को। लेट्स सी अदर स्टेटमेंट्स। Statement number 4 is NCDC provides loans and grants only to primary cooperative societies and do not support multi-state and national level society. देखो ऐसा नहीं है। NCDC प्राइमरी सेकेंडरी मल्टी नेशनल कोऑपरेटिव हर तरह की सोसाइटीज पे हेल्प करता है। मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 4 एज इनकरेक्ट। 4 मेंशन है हमारा सी में, सी भी एलिमिनेट हो गया है। 3 दोनों में कॉमन है, 3 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। 2 and 5 पे let's see fifth statement. NCDC has a in-house technical and marginal expertise in areas such as dairy, household, fishery, textile and civil engineering to assist cooperatives in project formation and implementation. This statement is correct. NCDC has technical and managerial expertise in multiple sectors. जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट की क्या क्या नीड है। तो स्टेटमेंट नंबर 5 इज करेक्ट, मेकिंग बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statement regarding RRBs in India. RRBs that is regional rural banks, इसके बारे में हम ऑलरेडी BRBL में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन करना थोड़ा इजी होगा आप लोगों के लिए। RRBs were established in 1975-76 to provide credit mainly to small and marginal farmer, agriculture labor, artisans and small entrepreneurs. Is this the definition? Yes, this is. जैसे ही फर्स्ट करेक्ट हुआ सी एलिमिनेट हो चुके हैं। The amalgamation process of RRBs aimed at one state one RRB principle in smaller states and reducing the number of RRB in large states to improve the efficiency and profit making. This statement is also correct. Let's see statement number 3. RRBs are eligible institutions to exclusions of second scheduled
of RBI Act. This is also correct. तीनों statement correct है. D is the correct answer. RRBs are indeed eligible for inclusion of in second schedule of the Reserve Bank Act, giving them certain privileges under the banking system. Now we have Unit 10 on hand, financing agriculture and allied activities. Finance, agriculture finance क्या होता है? Credit for agriculture production and investment, short, medium, long-term finance, support farm income and productivity, backbone of rural economy. ठीक है, तीन तरह के फाइनेंसेस होते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग. शॉर्ट इज फॉर क्रॉप लोन्स, मीडियम इक्विपमेंट्स के लिए होता है, लार्ज लैंड और इरिगेशन के लिए होता है. इन पॉइंट को हम लर्न करेंगे. शॉर्ट टर्म 12 महीने के लिए होता है, मोस्टली थ्रू केसीसी होता है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड से होता है. किसके लिए होता है? सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के लिए, लेबर कल्टिवेशन एक्सपेंसेस के लिए. मीडियम इज फॉर 3 to 5 years, दिस इज फॉर मशीनरी बेसिकली एंड माइनर इरिगेशन, डेयरी एनिमल्स के लिए. लॉन्ग टर्म इज फॉर 15 years, ठीक है, जिसमें लैंड डेवलपमेंट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और प्लांटेशन ऑफ क्रॉप से रिलेटेड बात होती है. देन वी हैव किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. एलिड एक्टिविटीज़ क्या क्या? फिशरी है, एक्वाकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्ट्री है, सेरिकल्चर है, इसका आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. रिगार्डिंग क्रॉप लोन प्रोडक्शन, चलो आई एम गिविंग यू अ 2 minutes ब्रेक हेयर. ठीक है, रीड दिस क्वेश्चन, आई विल बी बैक इन 2 minutes.
जी चलिए लेट्स कंटिन्यू. सी I hope you have read this question. ठीक है. Here, let's see the answer. D is the correct answer. Statement number 5 and 2 are incorrect. Production credit includes all seasonal activities from land preparation to harvesting, covering input and labor. NCL preparation is no longer compulsory annually. It may be prepared once in 3 years or substituted with simple loan application depending on the cooperative directions. DLTCs fix small of scales of finance of crop and includes representatives from bank, agriculture departments and progressive farmers. NABARD permits flexible measures such as simplified role applications and delegation of power to PAC to meet diverse credit needs. SLTC's primary review satisfies scale of finance fixed by DLTs. They do not determine detailed scale themselves. Let's see question number 2. Question number 2. Regarding crop loan assessment and Kisan credit card scheme, which of the following statements are correct? For crop loan, the repaying capacity of small farmers often need to consider incomes from allied activities and other sources, whereas for large farmers, crop income alone may be sufficient. Crop loan लेने के लिए कैपेसिटी देखी जाएगी स्मॉल फार्मर्स की, है ना. स्मॉल फार्मर्स की रीपेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी. ठीक है. एंड क्रॉप इनकम फॉर अदर फार्मर्स के लिए क्रॉप इनकम सफिशिएंट है कि क्रॉप से कितनी इनकम आती है. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1 एज करेक्ट. Under mass dispensation program, banks can assume repaying capacity of farmers to be 45 to 65% of the gross value of produce typing depending on type of crop and irrigation. Statement number 2 is also correct. Mass dispensation norms suggest 45 to 65% of GVP depending on rainfall irrigated continuation of the crop and irrigation. Next, KCC system allows farmers to draw funds as needed, removes the need of yearly loan renewal, and promotes frequent interaction between bank and the borrower. ठीक है. दिस इज करेक्ट. बार बार लोन लेने की नीड नहीं. यूज केसीसी एंड गेट द विड्रॉल एज मच एज यू नीडेड. ठीक है. द नेक्स्ट इज the flex KCC concept provides a mixed fixed limit based on land value exceeding post harvest storage and consumption need. This is not correct. Flex KCC provides a flexible limit not tied to value of the land, and it includes post harvest storage, consumption and other farm expenses. Exclude लिखा है यहाँ पे. It includes. ठीक है. Recent revisions of KCC scheme includes provision of working capital of farm animal husbandry and fishery, also as well as benefit linked to PM Kisan and pension schemes for small and marginal farmers. This statement is correct. Recent जो amendment है वो यही है. रिवीजन जो है वो यही है. Recent KCC update covers working capital of animal husbandry, fishery and benefits under PM Kisan pension schemes. Regarding the features and operations of KCC scheme, which of the following statement are correct? The KCC scheme is implemented by the commercial banks, RRBs and cooperatives, and also bank discretions to adapt guidelines based on the location specific requirement. The short term is this correct? अच्छा स्टेटमेंट नंबर 1 बताएंगे. क्या स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है? यस स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है. Statement number 2. The short-term credit limit for a farmer raising a single crop is calculated based on the scale of finance plus 10% of the post-harvest household need, 20% of the repair maintenance and crop assistance asset insurance. This is correct. Statement number 2 is correct. इसे आप learn करेंगे
110% लर्न करेंगे. Only owner cultivators are eligible for Kisan credit card. Tenant farmers, sharecroppers and joint liability groups are excluded. ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट. इसमें एलिजिबल सब है, दे आर इंक्लूडेड. ये ना एक्सक्लूड नहीं है. जो टेनेंट फार्मर्स है, कल्टिवेटर्स है, शेयर क्रॉपर्स है, ये आर दे आर नॉट एक्सक्लूडेड. ठीक है, दे आर इंक्लूडेड, दे आर द ओनली कल्टिवेटर्स. अच्छा ठीक है, ये लिखा है टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स है, एंड जेएलसी इज एक्सक्लूडेड. नहीं, जेएलसी इंक्लूडेड है, जेएलसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंक्लूडेड है, दे आर इंक्लूडेड. स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया इनकरेक्ट. हमें पता चल गया ए बी इज द करेक्ट आंसर, है ना. लेट्स सी स्टेटमेंट नंबर 4. For marginal farmers, a flexible ACC limit is 10 to 50K may be provided without linking it to land value, covering post-harvest consumption and minor investment. Again, correct. The maximum permissible KCC limit for non-marginal farmers is determined by the short-term loan limit for the first year plus 50% of the estimate long-term loan components. This is wrong. The maximum permissible limit, that is MPL, for non-marginal farmers is the fifth year short-term limit plus the estimate long-term loan component, not 50%. Estimate है, पहली बात तो ये 50% है नहीं. ठीक है, दिस इज एस्टिमेट एंड नेक्स्ट इज फर्स्ट ईयर. नहीं, यहाँ पे फिफ्थ ईयर है, दिस इज फिफ्थ ईयर. ठीक है, so fifth is also incorrect. B is the correct answer. The maximum permissible limit for non-marginal farmer is fifth year short-term limit plus estimate long-term component, not 50%. Next, a cooperative bank under sanction has sanctioned KCC to a group of farmers based on the last KCC guidelines. Which of the following statements are correct regarding disbursement, repayment, security, and other features of KCC? The short-term component of KCC limit is a revolving cash credit facility with each withdrawal allowed to be repaid within 12 months or as per the anticipated harvesting and marketing period of the crops. Farmers can withdraw the current season's limit through branches, ATM checks, business correspondence, POS, terminals as input dealers, and mobile-based transfer. Term loan components of KCC are repayable within 5 year, but banks may extend the period depending upon the type of investment. Crop loan under KCC do not require a separate margin, while term loan must follow RBI guidelines for margin requirement. KCC accounts are treated as standard assets for NPA classification if the outstanding balance does not exceed the drawing limit and each withdrawal is repaid within 12 months. Okay. Here the correct answer is D. All the statements are correct. All the statements are correct. इसे हम करेंगे learn. Next. Consider the following statements regarding Government of India schemes for post-harvest loans against negotiable warehouse receipts for small and marginal farmers. Only farmers who have ill-availed crop loans from banks and have Kisan credit card are eligible for concessional post-harvest loan under this scheme. Statement number 1 is correct. Statement number 2. The loan under these schemes cannot exceed 75% of the actual value of the product and interest subsidiation benefit is limited to 3 lakhs. This is correct. Learn करेंगे इसे भी हम. Farmer holding land up to 2 hectares are classified as marginal farmers and the loan can be availed for a maximum of 12 months. देखो, farmer holding land up to 1 hectare इनको कहते हैं हम marginal farmer. 1 हेक्टेयर तक मार्जिनल फार्मर, 1 से 2 हेक्टेयर को स्मॉल फार्मर्स. और लोन अवेलेबल 6 महीने के लिए कर सकते हैं मार्जिनल फार्मर्स, 12 महीने के लिए नहीं. ठीक है, 1 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर्स, लोन फॉर
6 months. 1 to 2 hectare. Small farmers. Small farmers come 12 months तक देता है. Third is incorrect. A is the correct answer. Next, regarding NABARD refinance support and cooperative bank, RRBs, and bank-led relief measures for crop production, which of the following are correct? NABARD sanctioned cash credit limit for state cooperative banks and refinance DCBs or direct lending to PACs at concessional rate of interest considering factors like CRR, CRAR, NPAs and lending program. This statement is correct. NABARD इसको है डायरेक्टली पैक्स को दे सकता है पैसे, ठीक है. डायरेक्ट लेंडिंग भी कर सकता है, रीफाइनेंसिंग भी कर सकता है, और बैंक क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी चेक कर सकता है. Next is statement number 2. Statement number 2 is bank availing refinance from NABARD are required to provide credit flow primary to large commercial farmers rather than small and marginal farmers. एक तो आपने लोन ले रखा है और आप कह रहे हो आप हाई रिस्क ले लो. दैट इज नॉट करेक्ट. बैंक इंश्योर करता है कि जब आपने NABARD से लोन लिया है तो आप छोटे फार्मर्स को दो ताकि आपको छोटे अमाउंट ऑफ लिमिट देना पड़े और आपकी फाइनेंसेस एक ही जगह स्टक ना हो. Making statement number 2 as incorrect. जैसे ही 2 incorrect हुआ, we get B as the answer. That is statement number 3 and 5 are correct. Let's see statement number 4. ठीक है, पहले हम 3 and 5 दोनों पढ़ेंगे फिर 4 देखेंगे. NABARD maintains delegate short term. अच्छा ठीक है, नहीं, D में भी नहीं है. 2 is not in D as well. 135 common है. We have to put our brain to 4. ठीक है, चलो. Okay, NABARD maintains dedicated short-term rural credit refinance funds and may also restore the market borrowing to meet the finance needs of banks. This is correct. Farmer in crop loan under NABARD support schemes are required to insure their crops under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the primary care offered to concessional rates. Because why क्यों दिया प्रीमिया क्यों दे रखा है इनको concessional rate पे कि एटलीस्ट बैंक को उनके पैसे वापस तो मिल पाएंगे. ठीक है, इफ दे दिल हैव, अगर ये लोग बीमा करा लेंगे, इफ द फार्मर्स विल गेट द बीमा, द इंश्योरेंस फॉर द क्रॉप, इवन इफ द क्रॉप गेट ruined, they will still get the money. This bank will still get it money back. That is why this योजना इसको इंश्योरेंस कराना इंपॉर्टेंट कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 as correct. 4 देखते हैं. In case of natural calamities, banks are expected to convert outstanding short-term loans into medium-term loans for a moratorium of at least 1 year based on severity of the government-issued अनिवार्य सर्टिफिकेट. अगर नेचुरल कैलामिटी आती है ना तो बैंक्स को पता है पैसे तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो शॉर्ट टर्म लोन्स को लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, बट इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट इशूड अनिवार्य सर्टिफिकेट चाहिए होता है. द calamity effect area, short-term loans can be converted to medium-term loans with a moratorium and a relief is granted based on the अनिवार्य certificate from the state government. ठीक है, financing rural non-farmer sector. मीनिंग क्या है रूरल नॉन फार्मिंग सेक्टर का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर लोकेटेड इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज, सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स. सॉरी. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस, एक्टिविटीज, फाइनेंसेस, ये सब आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, SIDBI ये है अपेक्स MSME इंस्टीट्यूट. दिस रीफाइनेंस एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग ऑन एंटरप्राइज प्रमोशन. गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है इसमें? मुद्रा योजना, PMEGP, SFURTI, NRLM. ऑल दी स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मुद्रा योजना में शिशु को यू कैन गेट अ लोन अप टू 50,000 रुपीज फॉर अ शिशु दैट इज अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. किशोर दैट इज अ टीनेजर कैन गेट अ लोन अप फ्रॉम 50K to 5 lakh. एंड तरुण दैट इज अ पर्सन हु कैन गो टू कॉलेज. ठीक है, दैट इज 5 to 10 lakh रुपीज. चैलेंजेस देख लेंगे, पढ़ सकते हैं आप सब कुछ. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूरल नॉन फाइनेंस सेक्टर एंड इट्स फैसिलिटेटिव इंस्टीट्यूशनल सेटअप इन इंडिया. Please go ahead, read this question.
चलिए, the term village and small industries are used by the Erstwhile Commission to denote what is not now known as the rural non-farming sector. This statement is correct. This statement is correct. The Planning Commission indeed used. Okay. The Planning Commission. The Planning Commission indeed used village and small industries instead of RNFS. Okay? These are known as the RNFS nouns. Next is under the seventh plan, the VSI sector was divided into 8 subsectors, including Khadi and village industries, handloom, sericulture, handicraft, core, small scale industries, and parlooms. Statement number 2 is also correct. Next, the District Industry Center DIC program, launched in 1979, was invented to provide a package of assistance for creating employment opportunity and rural and backward areas, and also to conduct industrial potential surveys. This statement is again correct. DIC का क्या काम था? Provide करना, packaging करना, assist करना, किसमें कि employment मिल जाए किस तरीके से, और ऐसे सर्विस करना रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज में, ताकि पता चल पाए गवर्नमेंट को कि किस सेक्टर पे हमारे को वर्क करने की नीड है. द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो 1 2 3 जहाँ पे एक साथ है, लेट्स सी दैट. 1 2 3 एक साथ सिर्फ और सिर्फ ए में हमें पता चल गया ए इज द करेक्ट आंसर, बट वी हैव टू सी एवरीथिंग. The Small Industry Development Organization, established in 1954, serves as an apex body for the promotion and monitoring of the small scale sector, and also established NIESBUD in 83 for entrepreneurship development. This is correct. हमने पढ़ा था NIESBUD 1983 में आया था और IIE 1993 में आया था, है ना. The Rural Industrial Project, launched in 1962, aimed at promoting large-scale industrialization through foreign direct investment and selected rural district. देखो, the RIP were not meant to promote small-scale industrialization through FDIs. They were centrally sponsored schemes launched in 1962 to involve techniques and linkages, ताकि जो small scale industries है, entrepreneurs है, उनका development हो पाए. ठीक है, ताकि उनका development हो पाए. Fifth incorrect है. Next, which of the following statement regarding the rural non-farm sector in India are correct? Next, हाँ जी. Which of the following statement regarding the are correct? Employment growth in the farm sector has matched the overall employment growth in rural India, reducing the need for diversification into non-farm activities. Rural industries are generally more labor intensive and less capital intensive, helping reduce migration from urban to rural to urban areas. देखो, ये तो हमें पता चल गया कि रूरल इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, दे आर लेबर इंटेंसिव. ठीक है, और इससे हम क्या डिस्करेज कर रहे हैं कि आप अर्बन एरियाज में नहीं जाओ. तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमें चल गया करेक्ट है. ठीक है, लेट्स सी. RNFS includes all non-agriculture activities such as manufacturing, processing, trade, construction and service carried out in rural areas. This is again correct. द नॉन फार्मिंग, देखो हम क्या कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं. तो जहाँ पे भी हमने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, प्रोसेसिंग भी आएगा, ट्रेड भी आएगा, कंस्ट्रक्शन भी आएगा, सारी एक्टिविटीज दैट इज एक्सेप्ट फार्मिंग, अदर देन फार्मिंग. नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन ऑल्सो ऑब्जर्व. देखो हमारा 2 and 3 करेक्ट होते ही ये इनकरेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, द नॉन 4 ये भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है. B is the correct answer, but हम पढ़ेंगे. The non-farm activities can observe surplus rural labor provides income during the agriculture on off season and help reduce poverty.
देखो, जब एग्रीकल्चर में काम नहीं है तो नॉन फार्म एक्टिविटीज कर लो, मैन्युफैक्चरिंग में कर लो, ट्रेड कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, यू कैन डू अदर एक्टिविटीज सो दैट आपके पास पैसे इनकम आते रहे, और इनकम आएगी तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी. RNFS is homogeneous across regions with similar productivity and low income across its subsectors. Similar productivity नहीं हो सकती. एक तो ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, सॉरी होमोजीनियस नहीं है, डाइवर्स है. तो टेक्नोलॉजी अलग अलग है, इनकम अलग अलग है, पैसे अलग अलग लग रहे हैं, एंड डिफरेंट इनपुट्स है, डिफरेंट आउटपुट्स है, तो देर इज नो होमोजिनिटी, देर इज ऑलवेज डाइवर्सिफिकेशन, हेट्रोजीनियसिटी. ठीक है. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 5 एज इनकरेक्ट. चलिए. Employment growth in the farm sector has not kept pace with general employment growth, hence they need a stronger non-farm sector. Consider the following statements about recent trends in rural non-farm employment and income in India. The growth of non-farm employment in India, unlike in many other countries, have occurred largely within rural areas rather than through migration to urban centers, making rural non-farm employment a unique feature of Indian rural transformation. देखो, हम चाहते हैं कि माइग्रेशन ना हो, है ना, एंड एक्टिविटीज कम हो रही है. वी नो एग्रीकल्चर में ज़्यादा ध्यान ना देके हम चाहते हैं माइग्रेशन तो कम हो और पैसे बनते रहे, स्ट्रांग हुआ हमारा रूरल लेवल. दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. Between 1999 and 2000 and 2011-2012, the share of rural employment in the construction sector declined due to mechanization and urban migration. This is incorrect. Construction sector जो है धीरे धीरे बढ़ा है, और ये बढ़ा है इस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, घटी नहीं है. अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो ऑब्वियसली सेक्टर्स जो है माइग्रेशन कम हुआ है. Rising rural wages in recent years have influenced by multiple factors including urban construction growth, including minimum support price and implementation of मनरेगा. क्योंकि हम 100 days दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, 100 days एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड रहे एंड पीपल डू नॉट लीव देयर हाउसेज एंड माइग्रेट टू अर्बन एरियाज. वी नीड द रूरल एरिया टू ग्रो एज वेल. ठीक है. मेकिंग स्टेटमेंट नंबर 3 एज करेक्ट. Which of the following statement correctly describes the strength and weaknesses of rural non-farm sectors in India? The rural non-farm sector in India benefits from strong institutional foundation support by entities like KVIC, SIDBI, and State Khadi Board, which promotes credit access and market linkage. This statement is correct. रूरल नॉन फार्मिंग सेक्टर्स जो है स्ट्रांग हुआ है क्योंकि इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? SIDBI से, नेशनल हैंडलूम सेक्टर से, KVIC से. इससे क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एक्सेस मिल पा रहा है टू द पीपल हु डू नॉट हैव मनी, ताकि वो अपना काम खुद कर पाए, सेल्फ सफिशिएंट हो पाए. एंड सेल्फ सफिशिएंट के साथ हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा प्रमोशन रहेगा. क्यों? देखो, अगेन एज आई टोल्ड यू, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी डिमांडिंग, but this is very expensive, people cannot afford it, but people in the outside, like अगर हम outside world can afford it. Why? Because हमारी इकोनॉमी उनसे थोड़ी कम है. वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, दे आर अ डेवलप्ड कंट्री. इससे हमारे पास पैसे आने के ज़्यादा तरीके हैं. Lack of infrastructure, especially unreliable power supply and poor connectivity, continues to be a major obstacle of expansion in non-rural areas. This is correct. देखो, infrastructure ढंग का नहीं है, that is why growth में थोड़ी तो कमी है. The उद्योग आधार memorandum and Aspire scheme were introduced to simplify registration for small-scale entrepreneurs and promote innovation in the rural area. This is correct. उद्योग वाला, this उद्योग आधार memorandum came in 2015 and Aspire also came in 2015. एंड दोनों में क्या काम था? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ताकि जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो. कहाँ पे? रूरल एरिया में. नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ रूरल लिटरेसी एंड, अभी तक हम चल के 1 2 3 करेक्ट है. 1 2 3 एक साथ है स्टेटमेंट नंबर ए में एंड बी में, डी में बाकी नहीं है. बी एंड सी हम एलिमिनेट कर चुके हैं. विल सी स्टेटमेंट नंबर 5. द एब्सेंस ऑफ the high level rural literacy and strong
Forward backward linkage between agriculture and non farm enterprise have ensured sustained productivity growth overall India. क्या बहुत ज़्यादा लिटरेसी है रूरल एरिया में? बिल्कुल भी नहीं. हाई लेवल लिटरेसी जो है रूरल एरिया में है ही नहीं. दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट. द एब्सेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंकेज एंड लो लेवल लिटरेसी, इसकी वजह से हम वीक है, स्ट्रेंथन नहीं है. द एब्सेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड इनएडिक्वेट एजुकेशन इन रूरल एरिया लिमिट लेबर प्रोडक्टिविटी एंड रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर लो पेइंग कैजुअल वर्क ऑफ हाई वेज एम्प्लॉयमेंट. देखो ये और ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है. आइदर दिस विल बी करेक्ट और दिस विल बी करेक्ट. हमें पता चल गया तो इनकरेक्ट है ही. तो फिफ्थ इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement regarding the Khadi and Village Industry Commission and its related programs are correct? ठीक है, आर करेक्ट नीचे से पढ़ा है मैंने. The KVIC, established in 1951 by an act of parliament, is responsible for planning, promoting and implementing programs for development of khadi and village industries in rural India. This statement is correct. Next, under the Prime Minister Education Generation Program, both new and existing units are eligible for assistance, collateral securities and mandatory loan of exceeding 10 lakh rupees. The प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है? This is for only new units, not for the old units. New units only. Units are only eligible for assistance. No collateral security, no third party guarantee is needed. No collateral security, no third party guarantee. Schemes of funds for regeneration of traditional industry provides financial support up to 8 CR per project and aims to organize traditional artisans into clusters for small long-term responsibilities. This is correct. 8 करोड़ रुपीस तक का लोन दे सकते हैं हर प्रोजेक्ट पे, ताकि जो हमारा ये है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो पाए, है ना. मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा हाथ का काम बहुत अच्छा है. आर हैंडलूम्स, आर हैंडवर्क इज वेरी ब्यूटिफुल. दैट इज वाई वी वॉन्ट टू प्रमोट दिस अंडर द interest subsidies eligibility certificate scheme. Funding is provided as at concession rate of 4% per annum for working capital purposes to register KYC institution. This is again correct. The ISEC scheme provides concessional funding of 4% per annum for working capital to get registered with KVIC institution to bridge the fund gaps, है ना. The Khadi reforms and the development program focuses on repositioning Khadi in line with modern market requirements and enhancing artisan earning through selective subsidies and better remuneration. This is correct. By the reading of it हमें पता चल रहा है ये correct है. A is the correct answer. ठीक है, सिर्फ statement number 2 incorrect है. Last question for the day. Consider the following statement about the Indian handloom sector and government initiatives supporting it. The handloom industry provides employment for more than 43 lakh weavers, the majority of whom are women and economically disadvantaged group. This statement is correct. This statement is correct. Nearly 65% of India's operational handlooms are located in Northeast region, which also accounts for almost around half of the country's total weavers. नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी वीविंग सेक्टर्स है एंड बहुत ज़्यादा गरीबी है, एंड उसको इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग एवरी पॉसिबल थिंग अंडर दी हाथ कार्ग संवर्धन सहायता component. The government bearer 100% of the cost of the loom and accessories supplied to the weavers. This statement is not correct. देखो 90% गवर्नमेंट होती है, 10% जो है वो होता है बेनिफिशियरी. ठीक है, 10% इज बेनिफिशियरी, 90% इज गवर्नमेंट and 10% beneficiary. The Weaver Mudra scheme offers credit to weavers at 6% interest rate along with marginal money assistance with 10,000 rupees per weaver.
This is correct. Mudra scheme provides credit at 6%, margin money assistance up to 10,000, and credit guarantee for 3 years. Credit guarantee for 3 years. Indian handloom brand launched in August 2015 promotes product for authentic traditional designs and aims for zero defect and zero effect of the environment. This is correct. इस statement को हम learn करेंगे. Making third incorrect. C is the correct answer. That is it. बची हुई दो यूनिट, that is unit 12 and 13 will cover in tomorrow's class with module C and D. Tomorrow we'll have module from unit 12 to unit 20 covered, and whatever doubt you have in module A or B, please let me know in the chat section. If you do not have any doubt, that is well and good. We'll be bringing a lecture on module C and D together tomorrow. Okay, meet you tomorrow at 6. Bye bye.